गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मिसयूज़ ऑफ अबैटमेंट ऑफ सुसाइड लॉ। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पुलिस और कोर्ट्स को कि आप अननेसेसरी प्रोसिक्यूशन मत करो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड केसेस में, जब वो वर्क प्लेस से अगर स्टेम हो रहे हैं तो, या एमर्ज हो रहे हैं तो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी को एनकरेज करते हो, इंस्टिगेट करते हो, या फिर किसी को आप हेल्प करते हो, एड करते हो कि सुसाइड कमिट कर ले वो पर्सन, तो उसको अबैटमेंट ऑफ सुसाइड माना जाता है। और वो सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 45 ऑफ बीएनएस में जो है वो पनिशेबल है। तो इसके अंदर मतलब आप किसी को इंस्टिगेट कर रहे हो कि वो सुसाइड कर ले, एंगेज कर रहे हो एक या एक से ज़्यादा लोगों को, कॉन्स्पिरेसी हैच कर रहे हो कि उस पर्सन को सुसाइड के लिए जो है उकसाया जाए, इंटेंशनली एड कर रहे हो किसी तरह की आप उसको कि वो सुसाइड कर ले, तो इस तरह से जो है वो हम क्लियर कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि अक्यूज़ ने जो एक्ट किया है सुसाइड का, अक्यूज़ ने जो एक्शंस थे, क्या वो डिसीज्ड पर्सन की सुसाइड में उसका कुछ रोल था। तो अगर प्रूव हो जाता है तो पनिशमेंट इसमें 10 साल तक की हो सकती है, ठीक है, एक फ़ाइन के साथ। और सेशंस कोर्ट में इसको ट्राई किया जाता है, और ये कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब कि पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, कोर्ट के वारंट के बिना। नॉन बेलेबल मतलब बेल जो है वो सिर्फ कोर्ट के ही कहने पर मिलेगी, ठीक है। नॉन कंपाउंडेबल मतलब केस जो है वो विड्रॉ नहीं किया जा सकता, चाहे कंप्लेनेंट जो है वो केस वापस भी ले ले, वो वापस ले ही नहीं सकता एक्चुअली, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्या है इस केस का, तो एफआईआर के मुताबिक सीनियर ऑफिसर जो कंपनी के हैं, उन्होंने एक सेल्समैन को जो है वो कंपेल किया और हरास किया कि वो वीआरएस ले 2006 में। लेकिन जब उस पर्सन ने मना कर दिया कि वो वीआरएस नहीं लेना चाहता, तो उसके ऊपर फिर भी प्रेशर बनाते गए, तो उस पर्सन ने जो है वो सुसाइड कर लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि जो है डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है कि उस पर्सन को इतना ह्यूमिलिएट और थ्रेटन किया गया, उसकी वजह से ही उसने सुसाइड किया है। और जो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है वो इसी केस में आई है। तो बेंच ने जो 2017 की इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसको जो है वो ओवरटर्न कर दिया है, कहा है कि इनसफिशिएंट एविडेंस है। उन्होंने कहा है कि अबैटमेंट ऑफ सुसाइड में जो है डायरेक्ट जो है एनकरेजमेंट या इंसाइटमेंट होनी चाहिए अक्यूज द्वारा, ठीक है। तो नीड जो है वो उन्होंने जो कोर्ट ने बताया कि नीड है डायरेक्ट इंसाइटमेंट और ओवरवेलमिंग हरासमेंट को प्रूव करने की, ठीक है। उन्होंने कहा कई बार तो ऐसे इंटीमेट रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें इमोशनल डिस्प्यूट जो है वो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस क्रिएट करते हैं और पर्सन सुसाइड कर लेता है, तो इसको मतलब वो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड थोड़ी है। फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी कहा है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ हरासमेंट जो है प्रोफेशनल डिस्प्यूट्स में एक्सट्रीम लेवल ऑफ हरासमेंट पहुंचनी चाहिए, तब जो है हम मानेंगे कि वो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए जो है वो कहा जा रहा है। तो उसमें कहा गया है सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी में कि कन्विक्शन के लिए कोर्ट को ने क्लैरिफाई किया है कि एविडेंस होना चाहिए कि अक्यूज़ जो है वो जानबूझकर उसको इस तरह से जो है प्रोवोक कर रहा था कि वो पर्सन जो है वो सुसाइड कर ले, ठीक है, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ग्लोबल डिजिटल फ्रेमवर्क फॉर एथिकल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 इनाग्रेट की है, और 8th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस भी जो है वो इनाग्रेट किया है। तो पीएम मोदी ने एम्फेसाइज़ किया कि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है इंडिया में। 120 करोड़ मोबाइल यूज़र्स हैं इंडिया में, 95 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स हैं, 40% ऑफ ग्लोबल डिजिटल ट्रांजेक्शन्स इंडिया से ही हो रही हैं, ठीक है। तो आईटीयू क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के लिए। ओरिजिनली 1865 में बनी थी, जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इंडियन मोबाइल कांग्रेस क्या है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस बेसिकली लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी फोरम है एशिया का, और ये डिस्कस करता है फ्यूचर ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब में। तो इस बार जैसे 5G टेक्नोलॉजी पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस रहा। तो आईएमसी ने हाईलाइट किया लेटेस्ट इनोवेशंस टेलीकॉम और डिजिटल सेक्टर्स में। इवेंट ने एनकरेज किया कोलैबोरेशन बिटवीन ग्लोबल एंड इंडियन टेलीकॉम प्लेयर्स। आईएमसी सर्व करता है एज अ स्पेस फॉर डिस्कशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंडस्ट्री लीडर्स एंड पॉलिसी मेकर्स ऑन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेशंस, ठीक है। तो आईएमसी का जो विजन है वो इंडिया के डिजिटल इंडिया विजन के साथ ही जो है वो अलाइन हो रहा है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, डिफ्थेरिया। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिफ्थेरिया आउटब्रेक को दीर्घ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में रोकने के लिए स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वहाँ पर आ गया है और वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी गई है। डिफ्थेरिया एक सीरियस कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है नोज़ और थ्रोट की। पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड होता है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। पर्सन जो है वो सिक हो सकते हैं,
इन्फेक्टेड या ओपन सोर्स या अल्सर्स को टच करने से भी इन्फेक्ट कर देता है स्किन को, ओपन सोर्स और अल्सर्स करता है, और मेडिकेशन से इसको ट्रीट भी किया जा सकता है। तो सोर थ्रोट होता है शुरुआत के सिम्टम्स में, फीवर, स्वॉलन नेक ग्लैंड्स या फिर वीकनेस फील होती है, तो ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक्स या फिर डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन देकर जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है इसे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑसिफिकेशन टेस्ट। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक और सोशल इश्यूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुंबई के कोर्ट ने ऑसिफिकेशन टेस्ट ऑर्डर किया है डिटर्मिन करने के लिए कि वन ऑफ द पर्सन जो अक्यूज्ड हैं इस मर्डर केस में, एक पर्टिकुलर मर्डर केस में, क्या वो माइनर है या नहीं। तो ऑसिफिकेशन टेस्ट एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जो एनालाइज करता है बोन्स को ताकि एज को डिटर्मिन किया जा सके। तो इसमें होता क्या कि एक्सरेज लिए जाते हैं सर्टेन बोन्स इन द बॉडी के, ताकि डिटर्मिन किया जा सके कि डिग्री ऑफ ग्रोथ कितनी है बोन्स की। और क्योंकि कुछ बोन्स जो है वो ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं एक दूसरे के साथ सर्टेन एजेस पर, तो बोन्स जो है वो बता सकती हैं कि हमारे को कि कितनी पर्सन की एज हुई है। ठीक है। चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में ऑसिफिकेशन रिफ्लेक्ट करता है प्रोग्रेशन ऑफ बोन डेवलपमेंट। बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है ये फॉरेंसिक साइंस और लीगल कंटेक्स्ट में, ताकि इंडिविजुअल की जो है एज को डिटर्मिन किया जा सके जब ज़रूरत पड़े तो। और इसको मेडिकल सेटिंग्स में भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। जैसे स्केलेटल मैच्योरिटी देखने के लिए चिल्ड्रन में जिनकी ग्रोथ डिसऑर्डर्स चल रहे हैं। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ई माइग्रेट पोर्टल। टॉपिक इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों के इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ने ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ई माइग्रेट पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, फैसिलिटेट और मैनेज करने के लिए माइग्रेशन ऑफ इंडियन वर्कर्स। तो ये एक सेफ ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क देता है माइग्रेंट वर्कर्स को, सेफ और लीगल मोबिलिटी चैनल्स दे रहा है इंडियन माइग्रेंट्स को, 24/7 मल्टीलिंगुअल हेल्पलाइन सपोर्ट दिया जा रहा है, डिजी लॉकर के साथ इंटीग्रेट किया गया है इस सिस्टम को, ताकि सिक्योर पेपरलेस डॉक्यूमेंट सबमिशन हो सके। कॉमन सर्विस सेंटर्स के साथ पार्टनरशिप भी की जा रही है ताकि रूरल एरियाज़ में भी सर्व किया जा सके। जॉब सीकर्स को भी जो है इसमें सपोर्ट किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ताकि वन स्टॉप मार्केट प्लेस उन्हें ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मिल सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैका ज़िला। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्पेस एक्स ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, अपनी स्टारशिप रॉकेट को एक इनोवेटिव स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए, जिसको मैकाजिला कहा जा रहा है, उन्होंने लैंड किया है स्टारशिप रॉकेट को। तो मैकाजिला एक निकनेम है लार्ज 400 फीट रॉकेट कैचिंग स्ट्रक्चर का, जो कि स्पेस एक्स के स्टार बेस पर जो है लोकेटेड है। तो ये इसमें 2 एनॉर्मस मैकेनिकल आर्म्स का यूज़ किया जाता है जो कि चॉपस्टिक्स की तरह होती हैं। ठीक है। ये सुपर हैवी बूस्टर जो होता है उसको मिड एयर ही पकड़ लेती हैं और उसको अर्थ पर वापस ले आती हैं। तो स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट समझ लो ऊपर गया सुपर हैवी बूस्टर को लेकर, ग्राउंड से ऊपर चला गया। बूस्टर जो है वो सेपरेट हो जाता है अपर स्टेज ऑफ द रॉकेट से, और बूस्टर जो है वो वापस आ जाता है अर्थ के ऊपर। जैसे ही बूस्टर जो है लैंडिंग साइट के पास आता है तो मैकाजिला अपनी जाइंट आर्म से उसको पकड़ लेता है, पोजीशन पे ले आता है। तो ये बेसिकली मेथड बहुत ही यूनिक है। रिकवरी इसकी जो इससे हम रॉकेट रिकवरी कर सकेंगे वो फार मोर एफिशिएंट और रीयूजेबल है, और स्पेस एक्स जो है उसको फिर उस पर्टिकुलर रॉकेट को बहुत ही जल्दी से रिफर्बिश और यूज़ भी कर सकता है, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड फूड डे जो है वो हर साल अक्टूबर 16 को सेलिब्रेट किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ FAO को ऑनर करने के लिए। FAO जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, ओल्डेस्ट परमानेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, अक्टूबर 1945 में बनाई गई थी। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रूरल पॉपुलेशन में और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को में कंट्रीब्यूशन देने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, न्यूट्रिशन इंप्रूव करने के लिए इसे बनाया गया। तो ये गवर्नमेंट्स को, टेक्निकल एजेंसीज़ को हेल्प करती है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज़, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में। रोम में इसका हेडक्वार्टर है। 100% फंडिंग इसको मेंबर कंट्रीज से मिलती है। कई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो पब्लिश करता है, जैसे स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हेल फायर मिसाइल। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने रिसेंटली एक डील कंडक्ट की है US के साथ प्रोक्योरमेंट करने के लिए 170 हेल फायर मिसाइल्स। तो हेल फायर मिसाइल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट रेंज एयर टू ग्राउंड या फिर कभी कभी ये एयर टू एयर भी होता है, लेज़र गाइडेड सबसोनिक टैक्टिकल मिसाइल है जिसको 1972 में डेवलप किया गया था। तो ये आर्मर्ड व्हीकल्स जो होते हैं जैसे टैंक्स, बंकर्स, रडार सिस्टम्स, एंटीनास, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सॉफ्ट टारगेट्स या होवरिंग हेलीकॉप्टर्स, उनको टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं मिसाइल।
तो 7 से 11 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज रहती है और इसको कई तरह के फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, सरफेस शिप्स, मिलिट्री ग्राउंड व्हीकल्स के थ्रू ये इसे लॉन्च किया जा सकता है। सेमी एक्टिव लेज़र गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए ये लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रूपकुंड लेक। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कर रहा है रूपकुंड लेक को उत्तराखंड में और इसको श्रिंक कर रहा है। तो रूपकुंड लेक को हम लेक ऑफ स्केलेटन्स भी कहते हैं। ये ग्लेशियर लेक है उत्तराखंड की, लगभग 16,500 फीट अबव द सी लेवल पर लोकेटेड है माउंट त्रिशूल में, गढ़वाल हिमालयाज़ में। इसको लेक ऑफ स्केलेटन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ग्लेशियल बॉडी में बहुत ह्यूमन स्केलेटन्स कंसील्ड है, कईयों की तो फ्लैश तक भी प्रिजर्व पड़ी है, ठीक है। और ये स्केलेटन्स बहुत पुराने 9th सेंचुरी एडी से प्रिजर्व पड़े हैं, क्योंकि ये इतना ग्लेशियल रीजन है ये, वहाँ पर ये इसमें डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हिबाकुशा। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो निहोन हाडेंको जो कि ऑर्गेनाइजेशन है जो वेलफेयर ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ हिरोशिमा नागासाकी अटैक जो है उनके लिए काम करती है, जिसको हम हिबाकुशा कहते हैं, उन्हें इस बार का नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। तो हिबाकुशा क्या है? जापानीज़ वर्ड है ये उन सर्वाइवर्स का जो 1945 के एटॉमिक बॉम्ब अटैक्स को जिन्होंने सर्वाइव किया। लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग उस टाइम पर मर गए थे, लेकिन कई हज़ारों लोग जो उस टाइम पर सर्वाइव भी किए थे, उन्हीं लोगों को हम हिबाकुशा कहते हैं। उनको गवर्नमेंट ऑफ जापान से सपोर्ट मिलता है अभी तक और मेडिकल अलाउंस मिलता है, लेकिन उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है जापान में, क्योंकि ये माना जाता है कि उन लोगों की फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकली हालत जो है वो ठीक नहीं है, वीकेंड है, और रेडिएशन इफ़ेक्ट्स उनके जो है वो कंटेजियस भी हैं, ठीक है, ऐसा वहाँ पर बिलीव करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्वेल वेव्स। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद ने एक्सटेंसिव एडवाइजरीज दी हैं स्वेल वेव्स की अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स में और कुछ पार्ट्स ऑफ कोस्टल एरियाज़ में। तो स्वेल वेव्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ वेव्स जो कि आपके सरफेस ऑफ द सी पर आती हैं, और ये सीरीज़ ऑफ सरफेस ग्रेविटी वेव्स होती हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज करती हैं अपने आप को ग्रुप ऑफ सिमिलर हाइट्स और पीरियड्स में, और ये ट्रैवल करती है लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट मच चेंज। ये कोई लोकल विंड की वजह से नहीं होती हैं, कोई डिस्टेंट स्टॉर्म आई, समझ लो हरिकेन या फिर कोई गेल विंड्स आई, तो उसकी वजह से जो है ये आते आते जो है कोस्ट तक आ जाती हैं। ये उससे जो एनर्जी जो है एक तरह से रिलीज़ होता है, उससे ये वेव्स जो है वो आते आते कोस्ट तक आ जाती हैं, और इन स्टॉर्म्स में जो ह्यूज एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है एयर से लेके वाटर में, उसके थ्रू ये वेव्स बनती हैं। तो स्वेल वेव्स उनका जो है फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन नैरो होती है। वेवलेंथ जो है वो कभी बहुत रेयर होता है कि 150 मीटर से ऊपर जाए। और इंडिया में स्वेल सर्च फोरकास्ट सिस्टम जो है इनकॉइस का 2020 में बनाया गया था, तो वो अर्ली वार्निंग सिस्टम है। स्वेल वेव्स के बारे में वो फोर वार्निंग दे देता है लगभग 7 दिन पहले ही। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is misuse of abatement of suicide law. This topic is important for your polity section and also your social issues. So recently Supreme Court has said that police and the court should avoid unnecessary prosecutions in cases of abatement of suicide which stem from the workplace. So abatement of suicide refers to the term of encouraging, instigating or aiding any person to commit suicide. So it has been defined both in the IPC and the BNS, and it means that if you instigate any person to do suicide or engage with one or more people in any conspiracy for forcing someone to do suicide, or you intentionally aid anyone to do suicide, then of course it would be considered as abatement to suicide. So in legal case, proving abatement requires showing a clear connection between the action of the accused and the deceased person's suicide. Okay, so the punishment for abatement of suicide is up to 10 years imprisonment along with fine, and this offence needs to be tried in a sessions court, and it is a cognizable, non-bailable and non-compoundable in nature. Cognizable means police officer can make arrest without a warrant from court. Non-bailable means bail can only be granted to the accused at the discretion of court. And non-compoundable means that the case cannot be withdrawn by the complainant. Okay, even when complainant and accused have reached a compromise. So what is the background of this case? So according to the FIR, senior officers at a company had compelled and harassed a salesman
to opt for the company's VRS scheme in 2006, but he refused to take the VRS despite the persistent pressure. So he committed suicide by hanging himself because of the persistent pressure. Allahabad High Court, upon reviewing the officer's plea to quash the case, held that there was a direct link between the meeting where Jan felt humiliated and threatened and his subsequent suicide. So the present ruling by Supreme Court comes against the backdrop comes against this backdrop. So the Supreme Court has overturned the 2017 Allahabad High Court decision, finding insufficient evidence to support a prima facie case of abetment in suicide of an employee who was felt harassed by his superiors. Supreme Court has said that in case of abetment of suicide, there must be direct and alarming encouragement or incitement by the accused. So therefore, there is a need for direct incitement or overwhelming harassment, which can lead to psychological distress. Only then we can call it abetment to suicide. Okay, so Supreme Court has said that there are certain personal relationships in which emotional disputes can trigger psychological distress, but a simple argument or harsh exchange is insufficient for abetment. Similarly, in professional relationships, professional disputes must reach an extreme level of harassment so as to meet the criteria for abetment. So what are the requirements for conviction? Supreme Court has said that there must be evidence which indicates that the accused intended to provoke the suicide or acted in a way that made the deceased feel that he or she is left with no other recourse but suicide. Okay. So the next topic is Global Digital Framework for Ethical Use of Technology. This topic is important for your economy section. PM Modi has inaugurated the World Telecommunications Standardization Assembly 2024 and the 8th edition of the India Mobile Congress at Bharat Mandapam, New Delhi. So he has emphasized India's significant role in the telecom sector with 120 crore mobile users, 95 crore internet users, and 40% of the global digital transactions being from India. So what is ITU? It is the United Nations Specialized Agency for Information and Communication Technologies. It was originally founded in 1865 to facilitate international connectivity in communications network. So its headquarters is located in Geneva. So what is India Mobile Congress then? It is one of the largest telecom media and technology forums of Asia. So it discusses the future of digital communications and telecommunications in India and across the globe. So it features discussions on areas like 5G technology, artificial intelligence, Internet of Things, cybersecurity, and digital infrastructure. So IMC has highlighted the latest innovations in the telecom and digital sectors. This event also encourages collaboration between global and Indian telecom players. IMC also serves as a space for discussions between government officials, industry leaders, and policymakers on telecommunication regulations. And IMC also aligns with the Digital India vision by promoting advancements in digital communication and laying the foundation for future technologies like 6G, AI, and cloud computing. So the next topic is diphtheria. This topic is important for your social issues. So to contain the diphtheria outbreak in the district of Rajasthan, teams of the State Health Department and World Health Organization have landed in the district and started vaccination. So diphtheria is a serious contagious bacterial infection of the nose and throat. It spreads from person to person, usually through respiratory droplets like from coughing or sneezing. People can also get sick from touching infected open sores or ulcers. The bacteria can also infect the skin, causing open sores or ulcers, and this can be treated with medications. But at advanced stages, the infection can also damage the heart, kidneys, and nervous system. So typically, the symptoms of the infection include a sore throat, fever, swollen leg glands, and weakness. And neutralization can be done by using the diphtheria antitoxin and even antibiotics to prevent further bacterial growth. So the next topic is ossification test. This topic is important for your social issues. So a Mumbai court has ordered an ossification test to determine whether one of the persons accused in the murder case of a political leader is minor or not. So ossification test is a medical procedure which analyzes bones in order to determine the age. This test involves taking x-rays of certain bones in the body, such as the clavicle, sternum, and pelvis, to determine the degree of growth in our bones, because certain bones harden and fuse with each other at certain ages according to human body's developmental stage. These bones can be a way of marking age. In children and adolescents, ossification reflects the progression of bone development as well. Okay, so this test, ossification test, can be commonly used in forensic science and legal context to accurately determine the age of an individual. It is also sometimes used in medical settings to assess the skeletal maturity in children with growth disorders.
So the next topic is e-migrate portal. This topic is important for your economy section and also your social issues. So Union External Affairs Minister and Labour and Employment Minister have launched have launched this updated version of the e-migrate portal and mobile app. E-migrate portal is an online platform which is meant to facilitate and manage the migration of Indian workers who are seeking employment abroad. It aims to provide a safe and transparent framework for migrant workers by offering various services including information access, documentation, helpline support, integration with services, and other awareness campaigns. It promotes safe and legal mobility for Indian migrants. The upgraded platform offers 24/7 multilingual helpline support. It also features integration with the DigiLocker, which enables secure paperless document submission. It has also partnered with the common service centers so as to expand immigration services to rural areas. The platform also supports job seekers by offering them a one-stop marketplace for overseas employment opportunities. So the next topic is Mechazilla. This topic is important for your science and tech section. So SpaceX has achieved a significant milestone in space exploration by landing its Starship rocket using an innovative structure called Mechazilla. Mechazilla is the nickname of the large 400 feet rocket catching structure at SpaceX Starbase. So it features two enormous mechanical arms, often referred to as chopsticks. These arms are designed to catch the super heavy booster in midair as it returns to Earth. So how does this Mechazilla work? So first, the SpaceX Starship rocket, along with the super heavy booster, launches from the ground. After reaching a certain altitude, the booster separates from the upper stage of the rocket. Then the booster begins descending back to Earth using precision thrusters to control its path. As the booster nears the landing site, Mechazilla's giant arms move into position. So, what is the significance of this Mechazilla? This method of rocket recovery is far more efficient and reusable compared to traditional landing techniques. So, it is also cost effective because by catching the booster in midair, SpaceX can quickly refurbish and reuse it, okay, reducing the launch costs and increasing the sustainability of space missions. So, the next topic is Food and Agriculture Organization. This topic is important for your social issues and also your international relations. So World Food Day is celebrated annually on 16th of October to mark the establishment of F&O. So what is F&O? F&O. It is a specialized agency of UN and it leads international efforts to defeat hunger. It is the oldest permanent specialized agency of UN, established in October 1945. It improves access to nutrition, increases agriculture productivity, raise the standard of living in rural populations, and also contribute to global economic growth. So it leads certain programs and coordinates with the governments and technical agencies to develop agriculture, forestry, fisheries, and land and water resources. So its headquarters is located in Rome, that is in Italy, and it receives 100% of its funding from its member countries. So it publishes certain reports like the State of the World's Forest Report, State of Food Security and Nutrition in the World Report, and so many others. So the next topic is Hellfire missile. This topic is important for your security section. So India has recently concluded a deal with US for the procurement of 170 Hellfire missiles, which is one of the most popular short-range air-to-ground, sometimes air-to-air, laser-guided subsonic tactical missile used by the US military as well as 30 other US allies. So US began developing the Hellfire in 1972. This missile is used to target armored vehicles including tanks, bunkers, radar systems, antennas, communication equipment, soft targets, or even hovering helicopters. Each missile weighs about 45 to 49 kg. It has a range of 7 to 11 kilometers, and the maximum velocity of this missile is 950 miles per hour. It can be launched from several different kinds of fixed winged aircraft, helicopters, surface ships, and military ground vehicles. It also uses a semi-active laser guidance system and integrated blast fragmentation sleeve warhead so as to engage targets which previously needed several Hellfire variants to destroy. Okay.
So the next topic is Roopkund Lake. This topic is important for your environment section. So climate change is affecting Roopkund Lake in Uttarakhand, causing it to shrink annually. Roopkund is also known as the Lake of Skeletons, and it is a glacial lake in Uttarakhand. It is situated at 16,500 feet above sea level at the base of Mount Trishul in Garhwal, Himalayas. Why it is called Lake of Skeletons? Because it is the glacial body which conceals number of human skeletons, which have some of them even have preserved the flesh also. So these skeletons become visible when the snow melts in the region. These skeletal remains date back to even 9th century AD. Okay. So the next topic is Hibakusha. This topic is important for your social issues. So Nihon Hidankyo, which is an organization that worked for the welfare of the survivors of the bombings of Hiroshima and Nagasaki, called the Hibakusha, has been awarded the Nobel Peace Prize for this year. So Hibakusha is the Japanese word for those survivors of the for the survivors of the 1945 atomic bomb attacks on Hiroshima and Nagasaki. So by the end of 1945, more than 2 lakh people died as a direct result of these bombings, but many thousands of them survived with injuries from the attacks. And these Hibakusha are basically those people. Okay, so Hibakusha receive support from the Japanese government, including through medical alliance, but they face several kinds of discrimination in Japan because this discrimination is based on the common belief that these people may have physically or psychologically weakened system or a body, and the radiation effects are hereditary and contagious to them. Okay. So the next topic is swell waves. This topic is important for your environment section. So recently, INCOIS Hyderabad has issued extensive advisory for swell waves for Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands, as well as parts of coastal areas. A swell is basically a formation of long wavelength waves on the surface of the sea. These are composed of a series of surface gravity waves. Swell waves organize themselves into groups of similar heights and periods and then travel long distances without much change. They occur not due to the local winds, but rather due to distant storms like hurricanes or even long periods of fierce gale winds. During such storms, huge energy transfer takes place from the air into the water, leading to the formation of very high waves. Swells have a narrower range of frequencies and directions. Their wavelengths may rarely exceed more than 150 meter. So in India, we have early warning systems called the Swell Surge Forecast System, which was launched by INCOIS 2020, and it gives forewarning 7 days in advance about these swell waves. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.